Morning. Okay, great. So good morning everyone and welcome to your magic session day number 26. So आज का सेशन सच में बहुत ही मैजिकल होने वाला है क्योंकि हम सबकी लाइफ में राइट अंतरा रोचक प्रीति myself and Jagjeet, we all have done and we all know that we are doing and obviously we will be going to do certain mistakes consciously or unconsciously. Am I right? Right, Rochak? Yeah. Right. Yeah. So how we can magically transform each and every mistakes into blessings. And that's why it's going to be really amazing session. So I invite each and one of you, just be fully present here. And Preeti, मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है आपसे, जितना पॉसिबल हो सके आप एक जगह बैठ जाए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर और सेशन है हम सबके लिए. यस, हाँ, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके, सो हु वुड लाइक टू रीड टुडेस चैप्टर? कौन पढ़ना चाहेंगे आज के चैप्टर को? कम ऑन गाइस. अंतरा आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ूं? ठीक है, मैं पढ़ लेती, नो प्रॉब्लम. Okay, great. So can we give really appreciate and acknowledge Antara for jumping in? Preeti ji, Rochak, thank you so much. Great. So Antara, जी सर. अब जब आप इसको आज read out करें ना, so make sure that you are the generator, you are the source of this chapter which is coming there, right? Come from that background, okay? Yeah. Surely sir. And come from that background and curiosity कि क्या discover होने वाला है आपके लिए और जितने लोग अभी live हैं और जितने लोग इसको बाद में सुनने वाले हैं. Okay? जी सर. Right? So that's I just want to invite you. So let's jump into today's chapter. Yes, Antara. जी सर. So magically, what is the name? एक बार. So magically transform mistakes into blessings. Day 26. Magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it. Because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write. And we don't give it a second thought because we know that through their mistakes, they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes. And if we didn't make them, we would never learn anything. And we wouldn't grow any smarter or any wiser. Okay, great. Thank you so much. Can you scroll a little bit up, Jagjeet, if you are scrolling it? Let me see if I can scroll from my end also. Okay, great. So now guys, why we are here in this program, right? Rochak, Antara, Preeti, why we are into this program? What is, we will have a different perspective, right? Happiness, this and that. But ultimate thing we are into this program is to learn and grow, isn't it? Right? हम अपनी लाइफ में जो भी करते आते हैं, जो भी हम engagement करते हैं, is about learn and grow. So today's chapter is inviting each one of, and this is the most important chapter because of that. If we really want to learn and grow, we really need to make this context our context. If in our day-to-day life, we allow our children, Preeti, आपके बच्चे हैं दो, right? तो जब वो छोटे में गलतियां करते थे तो फिर अपन क्या करते थे, हम उनको कहते थे कोई नहीं बेटा, चलो दोबारा शुरू करो, राइट? दोबारा शुरू करो. एंड अंतरा, आप कॉलेज में पढ़ाते हो, राइट?
So ऐसा तो नहीं है ना जब वो मिस्टेक करते हैं तो यू अगेन इनवाइट, राइट? एंड रोचक, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और चीजों में लोगों को एम्पावर एंड सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे भी जो आपके स्टूडेंट होते होंगे उनको आप अपॉर्चुनिटी देते होंगे, ठीक है ये इन्वेस्टमेंट में कुछ हो गया तो क्या हो गया, लेट्स ट्राई अगेन. So today time is to really inquire, are we really practicing this or not for ourselves? Yeah. So keep that question in background and we'll discover more into it. Yeah, Antara, please go ahead. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from, it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Okay, can you be up there, Jagjit? Because this is, thank you so much. What a beautiful thing here the author is sharing with us, that we have, right? We all have the freedom to make our own choices, right? And that means that we have the freedom to make mistakes. We know that mistakes can hurt, but when mistakes can hurt, when we don't learn from the mistake that we have made. Yeah. So today is the opportunity, rather than just going through this chapter, is keep this question in our own background and mind, that are we learning from any mistakes or not. अच्छा, ये तो बहुत बार हुआ है ना, जब तक कि वो कहते हैं ना, डोंट सिट ऑन द फेंस, पेन इतना ज्यादा नहीं होता तभी अपन लोग जंप आउट करते हैं उससे बाहर, राइट? सो वी हैव टू चॉइसेस, either to make that pain so unbearable that we jump out and make that choice, like I did last year when my weight really gone up and high, 103 पहुंच गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है. सो दिस इज द मिस्टेक व्हिच आई डिड, राइट? वो पेन इतना हुआ तब मैं सोचा कि हेल्थ पे काम करना है. So let's see how we can transform that. Yeah. Yeah. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. This Let's is the yeah, thanks Archana. Antara, this is, guys, is the most important line. You know, in my entire learning experience with different organizations, I think this is what is the context which we all should really understand well. The first and the foremost and the important thing is to really own that, right? And can anyone from share, आप में से कोई मुझे share कर सकता है, what does this mean, owning it? meaning taking the full responsibility for your own mistake. Absolutely brilliant. Accepting and taking the complete responsibility of whatever has happened. और ये अंतरा बोलने में तो अच्छा लगता है. या जगजीत will want to add something it. I just wanted to say कि जैसे कल मैं गिरी हूँ, I could have blamed कि इन लोगों ने यहाँ अंधेरा कर रखा है, यहाँ लाइट नहीं है, इनको पता है ऊंची नीचे जगह है, तो आएगा तो उसको चोट लग सकती, गिर सकता है कोई. I did not say that. I just said that it is my responsibility. I should have been more observant. I should have seen that जगह ऊपर नीचे है. मुझे अपनी धुन में नहीं चलते जाना था. बात करते हुए निकल रही थी and I didn't even pay any attention. So that is what it means, owning your mistakes. So I am owning that mistake. It is my mistake कि मैं गिरी हूँ वहाँ पर. उनके घर से बाहर निकल के जब मैं बाहर निकल रही थी तो मैं गिरी इसलिए हूँ
क्योंकि मैंने नहीं देखा। आई एम नॉट सेइंग कि वहां बहुत अंधेरा है, उनको कुछ करना चाहिए, वहां पे लाइट लगानी चाहिए थी, कोई भी गिर सकता है, नॉर्मल रिएक्शन यही होता है। बट बिकॉज आई हैव बीन इन दिस वर्क, बिकॉज आई हैव बीन learning and knowing my own self, I did not blame them. I did not blame the situation. I owned my mistake, that it was my mistake. I was not being observant. So just wanted to say. थैंक यू सो मच जगजीत। एंड जब भी हम लाइफ में एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, we need to really get the distinction is the moment you own and take the responsibility what you left with। प्रीति, जब भी कोई गलती होती है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, किसी और को कहने के अलावा खुद जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप इसको करते हैं उस वक्त में जो अनुभव होता है आपका अपने साथ, वो एक अलग लेवल पर होता है, जबकि जब हम स्वीकारते नहीं हैं और उसकी जिम्मेदारी किसी और पे डालते हैं। You know, there are certain things, guys, जिसको when you really apply and really live that in life, you can only experience that. Otherwise, वो किताब में बहुत अच्छा लगता है, that own and take. But I invite each one of you today in your date, आज के दिन में एटलीस्ट आप जरूर जब ये सेशन कंप्लीट होके जाइएगा, सो देखिएगा कि क्या यदि कोई भी चीज मिस्टेक हो रही है, उस वक्त में पहला रिस्पॉन्स तो जनरली ब्लेम का ही आएगा, नो डाउट, वो मुझे भी आता है। बट हाउ फास्ट एंड विद हाउ मच वेलोसिटी यू कैन रियली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? और जब आप इसको आज प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज पुट इट इन द ग्रुप और यू कैन टेक्स्ट जगजीत और टू मी, सो दैट आप इसको रियली में लिव कर पाए rather than just being going through the book, right? So my invitation to each and every one of you. Yes, let's discover much more, Antara. Please go ahead and let's see much more about it. Let us consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun. And so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. Perfect. This is where really the bingo moment. आपके साथ कितनी बार हुआ है रोचक? दिल्ली में तो मेरे साथ में हुआ है भाई। रेड लाइट आया, ध्यान नहीं दिया, जंप कर दिया, या फोन पे बात कर रहे थे, याद नहीं रहा, ब्लूटूथ ने लगाया और हाथ आ गया पुलिस वाले का। एट द मोमेंट उसका हाथ आता है, पहला रिएक्शन जाता है, यार इसको, उनको कोई और काम ही नहीं है, इनको तो क्या होता है, इनको तो पैसा कमाना है। करेक्ट, फर्स्ट मोमेंट्री जो जाता है दिमाग से यही जाता है, राइट? And when we participate in this kind of session and chapter, and then getting realized, it's that I'm putting blame on that police wala rather than looking at what my mistake is. And as the law of attraction says, what the like attracts the like, isn't it? The like attracts the like. If I really firm and believe this principle of like attracts the like, then what? Whatever I'm liking to blame, I'm liking to complain, I'm liking to doing all those things, what going to attract? Maybe वो सामने वाले आदमी से ना है, but it is sure that you are going to experience the complaint and blame some other person in that environment. And that is where the inquiry is. If we really practicing the law of attraction called the like attracts the like, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आर वी, क्या हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में उतरने के लिए, या हम स्टिल भूल के अभी भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम पहले करके आए?
And let's see क्या बोलते हैं author, that you are human and you will make mistake. देखते हैं. You are human, you will make mistakes. And it is one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. Yes. No matter. Yes. This is so in this chapter today. एक बात तो ये है कि यदि मैं नहीं सीखूंगा तो तकलीफें मुझे और झेलनी है अपनी लाइफ में. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैटिट्यूड से कैसे सीख सकते हैं. जी, नो मैटर व्हाट. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? लेट्स आस्क हियर ना, व्हिच वुड यू प्रेफर. वरुण, क्या प्रेफर करना चाहेंगे? अंतरा, प्रीति, Blessings, blessings, या ओके, आई नॉट हर्ड फ्रॉम एवरीवन. प्रीति जी, क्या blessings, कट करना चाहेंगे आप? blessings. हाँ, रियली? ओके, ग्रेट. रोचक, Blessing. ब्लेसिंग, ग्रेट. सो लेट्स सी एंड इंक्वायर कि आज के पूरे 24 घंटे में जब ये सेशन रहेगा और हम चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, and can we keep that in our mind whenever I consciously start attracting and blaming anyone? Am I here to attract blessings, or am I here to attract more mistakes? Okay, so I just want to add here from my experience yesterday. So when I start counting blessings, the first blessing is that I was not alone. I had people with me. मैं जैसे ही गिरी उन्होंने मुझे उठाया, and मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था. इमीडिएटली उन्होंने नाक के नीचे वो रख के उसको खून को रोका. The other person just ran, वो जाके फर्स्ट एड लेके आया, पानी का ग्लास लेके आया. All these are blessings. A person running to get a glass of water for me, a person getting a first aid box for me. You know, उसी टाइम उन्होंने वो क्लीन करके बीटाडीन लगा के कि खून रुक जाए. And then I mean, they all, you know, walked me up to my house. मुझे घर तक छोड़ के गए. You know, and दूसरे पड़ोसी ने फ्लेक्सन दी, because मेरे घर में ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं होती, वो दे के गया. Then एक दूसरे भैया ने वो जो स्पेशल हल्दी होती है, जो हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोला, अपने घर से हल्दी दी वो. So these are all blessings. चोट लगी, मेरी अपनी गलती से लगी, but there were people around me who actually, you know, could provide that emergency support to me or help to me immediately. So these are the kinds of blessings when you start counting, and I am sure मैं जब लिखने लगूंगी तो 10 से भी ज्यादा निकलेंगी जब मैं इसके बारे में लिखूंगी. So just wanted to say, because this is so new and कल ही हुआ है मेरे साथ, and you all know. So I wanted to tell you how you can relate to your mistakes. जैसे मैंने कल की मिस्टेक से आपको ये बताया कि क्या-क्या ब्लेसिंग्स है. हाँ जी. Amazing. And एक और चीज जगजीत, you know, मैं जरूर चाहूंगा आप शेयर करो हम सबके साथ में. What happened the moment you start contemplating, और जब आप इस तरह से काउंट योर ब्लेसिंग्स करती हैं, इवन दो सिचुएशन में जहां पर कि आपको तकलीफ है, क्या एक्सपीरियंस आप करते हैं? आपका अनुभव क्या होता है उस मोमेंट में या उस क्षण के बाद में? And I also want to say, इसको मैंने खुद अट्रैक्ट किया है, क्योंकि लाइफ में कोई इंसिडेंसेस, कोई कोइंसिडेंस, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है. ये बुक बड़ी क्लियरली कह रही है. So कल somebody was talking to me and she was talking के मेरे हस्बैंड सड़क पे जा रहे थे, ऑपोजिट साइड से एक बाइक वाला आया तो उसने उसको हिट किया, एंड सो ही फेल एंड यू नो ही वाज नॉट वेल. उसके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी. एंड yesterday only I think I was crossing the road and मेरे दिमाग में आया कहीं मैं ना गिर जाऊं. That thought, and it happened.
Then I had a friend who has come over and we were talking about कि मुझे अप्रैल के महीने में ना अक्सर ये एंजाइटी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, मुझे सांस नहीं आती। मैं कितना पिछले कितने सालों से, जब मम्मी भी थी तो मैं, सब लोग सो जाते थे, मैं बालकनी में चक्कर लगाती रहती थी 12-1 बजे तक। मैंने एक झूला रखा था, उस पे जाके बैठ जाती थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, व्हाट हैपेंड, सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे रात को फिर से घबराहट हो रही थी और फिर मैं बालकनी में चक्कर लगा रही थी। When you are able to connect ना, then you become aware of it कि हमारे thoughts, हमारी feelings किस तरह से manifest हो जाती हैं हमारी लाइफ में। मतलब मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि 2 बातें कल मैंने जो कही जाने अनजाने में, they, because I attracted them in my life and there is no accident, I willed for it. मैंने कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करके उसको पावर दी। So just want to let you know that if you start practicing this work, और जब उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं ये भी कह सकती हूँ यार क्या टाइम चल रहा है मेरा, इतने दिन से वैसे तबीयत खराब है, अब गिर गई, अब ये हो गया, अब हो गया। नो, आई ओनली इन्वाइटेड इट। मैंने ही इसके बारे में बात करी और इतनी पावर दे के बात करी, इतनी फीलिंग्स के साथ बात करी कि वो मेरे लिए सच हो गया कल। एक ही दिन में, इंस्टेंट कहूँ अगर इसको, तो एक ही दिन में दोनों चीजें, मतलब 4-5 बजे मैं उनसे बात कर रही थी कि आई थिंक गर्मी के मौसम में ये होता है, वो होता है, एंड मैं ऐसे करती थी। और रात के 10 बजे के बाद 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं बालकनी में चक्कर लगा रही थी। सो इट हैपेंस एंड इट इज मैजिकल। सो सोचने से, कहने से पहले just take a pause. That is my learning from yesterday. कि unknowingly जैसे भी हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ। हाँ जी पूरम। थैंक यू सो मच जगजीत। आई एम श्योर आप और हम सब के लिए तो बहुत क्वेश्चंस है कि आज क्या मुंह से निकलने वाला है, राइट, अपने लिए और औरों के लिए। यस यस अंतरा, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डिस्कवर अ मोर। Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired you. Once you have chosen a mistake, ओके you ग्रेट, या लेट्स इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं फॉर एवरीवन। सो ये करना है अंतरा, प्रीति, वरुण, मी, माई सेल्फ, रोचक एंड जगजीत, ये करना है, राइट। तो प्रीति, यहाँ पर मैं सबके लिए इसलिए इसको हिंदी में क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट आई थिंक प्रीति इज मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट। मे बी दिस इज फर्स्ट एंड द मोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज आपने और मैंने सोचना है कि कोई भी मिस्टेक जो हमारे जीवन में हमने करी, हो सकता है वो छोटी सी मिस्टेक हो। छोटी सी मिस्टेक क्या होता है, हमको पता है कि किसी बात से हम एक सही वाइब्रेशन में नहीं है, खुश नहीं है, और हमने अननेसेसरी अपने फैमिली मेंबर किसी को इरिटेट कर दिया या कुछ बोल दिया, एंड वी नो दैट ये हमें नहीं करना, राइट। मे बी वो छोटी मिस्टेक हो सकती है, मे बी हो सकता है हमने किसी पर भरोसा किया और उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया, और मे बी हो सकता है कोई बड़ी मिस्टेक हो। तो आपने चुनाव करना है, राइट। और हो सकता है कि जो और लोग सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे इस वक्त में, है ना रोचक, यदि कुछ हुआ होगा पिछले 24 घंटे में, ओके। पूरन बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे। हाँ, तो ये डिस्टर्बेंस आई थिंक सब जने म्यूट पे चले जाओ। एक बार आप भी म्यूट पे चले जाए, ओके। इज इट बेटर नाउ? Anyone can unmute and okay, great, thank you. So this is very important. तो आप और मेरे को ये देखना है, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो, और मेक श्योर आज आपने लिख ली है
और सेशन के बाद आप जरूर लिख लें या सोच लें इसके बारे में, ठीक है। आप जाते हैं कि करना क्या है हमने जब वो मिस्टेक, बट मैंने भी ऐसा भी सोच लिया है, मिस्टेक मेरे दिमाग में भी आ गई कि अभी क्या हुई। ओके ग्रेट। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What ओके are the सो good? I'll go in English, you will, आप इंग्लिश में बोलेंगे, मैं हिंदी में जाऊंगा उस मिस्टेक उन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है अंतरा। तो जैसे आपने सोच लिया है नाउ कि मिस्टेक क्या है, जैसे मैंने भी एक मिस्टेक अभी सोची है क्या है, नाउ तो सेकंड चीज हमें सोचनी है, वो क्या सोचनी है, हमने कुछ सवाल उससे पूछने अपने आप से। जैसे पहला सवाल है कि आपने पूछना है कि मैंने सीखा क्या उस मिस्टेक से। कह तो दिया मैंने, अनजाने में मैंने अपने स्पाउस को, मदर को, फादर को, स्टाफ को, कलीग को, दोस्त को कह तो दिया, अब मुझे पता ये हो गया, पर उससे सीखा क्या मैंने, एंड व्हाट नेक्स्ट। What are the good things that came out of the mistake? हाँ, यू नो ये कुछ प्रोवोकिंग थॉट है जो उस मोमेंट में यदि मिस्टेक हो ना, लगेगा नहीं, कई बार लगता है कि नहीं नहीं गलती तो उसकी भी थी, उसने भी तो ऐसा किया था, राइट, दैट इज सो नेचुरल। बट remember that guys, we are here into this session for what is the intention? Learn and grow. If we really want to fulfill that intention to learn and grow, then we really to deep inquire, हमें पूछना होगा कि अच्छा क्या अच्छी बातें और चीजें हैं जो वो मिस्टेक हुई तो उस दौरान में मेरे लिए अब निकल के आई, ओके, एंड देन नेक्स्ट व्हाट। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no ग्रेट matter ग्रेट, so there's a very minute distinctions, you know, it doesn't mean that कि अपन मिस्टेक कर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। what here the author is focusing on is to be grateful for what you learn from the mistake, it's not because of the mistake. So and ultimately you're going to get something and learn and grow when you start inquiring, जो इसमें सवाल है पूछ के कि मैंने सीखा क्या, वो जो सीखा क्या है, you know, that is what you are grateful for. There's a distinction between have, you know, we done some mistake and then we're grateful. No. It's what we learn from that mistake that we are grateful for. Ji? Yeah. Yes, Antara. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Okay, great. So यहाँ पर जो भी ऑथर शेयर कर रहे हैं कि वो इनवाइट कर रहे हैं कि एक नहीं 10 यदि आप ब्लेसिंग्स लिख पाए कि आपने, ब्लेसिंग मतलब क्या हुआ कि आपने क्या सीखा उस गलती से, राइट। तो ब्लेसिंग यदि आप लिख पाए तो इट विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म दैट थिंग्स। और आप यदि कोई भी मिस्टेक्स आपसे होती है तो एक एग्जांपल जैसे शेयर कर रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आप गाड़ी रश में चला रहे थे और वो आपका चालान काट रहे हैं, तो आप देखते हैं कि किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, जबकि हमारी जेब से पैसा जा रहा है, चालान कट गया है, हो सकता हम कहीं जा रहे थे लेट हो गए होंगे, और उस टाइम पे ऑब्वियसली नेचुरल पहला इंस्टिंक्ट तो नाराजगी और गुस्सा ही आएगा, यू नो। पर हम शुक्रगुजार किस चीज के लिए हो सकते हैं, लेट्स सी हाउ द ऑथर हैज क्रिएटेड फॉर अस। जी अंतरा। I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. I'm grateful to the police because, if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced.
I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and the others in serious danger. I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Wow. Isn't it amazing, guys? This gives such a power that how आप और मैं convert कर सकते हैं each mistakes into blessing. But for that, we need to really concentrate and think like the author has created. Asking question और सोचना है कि क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा, you know, and create it into a gratitude form, right? It's really going to be a blissful journey. Yes. What next, Chandra? Oh wow, this is the most important thing. This is the most important thing. Yes. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one mistake you made in your life. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Great, thank you so much, अंतरा. और तो ये जो एक्सरसाइजेस में दो एक्सरसाइज तो कॉमन है जो आप और हम एवरीडे करते हैं, राइट? पहली कौन सी है? सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स। उन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार होना ऊपर वाले का जो आपकी लाइफ में है, और पूछना अपने आप से कि मैं क्यों शुक्रगुजार हूँ। आप, आई एम श्योर आप कर रहे होंगे। एंड व्हेन यू कंप्लीट द डे, आप अपना मैजिक रॉक लेते हैं और याद करते हैं पूरे दिन भर में क्या हुआ, और उस एक घटना के लिए जो सबसे अमेजिंग थी उसके लिए आप शुक्रगुजार होते हैं, राइट? और क्यों ऐसा करते हैं आपको पता है ना? सो दैट यू मेक योर ब्रेन प्रैक्टिस इट, that it can see and look for what is great happening in your life, right? What is great happening, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ ग्रेट आपकी लाइफ में हो ही रहा है। और यदि आप नहीं करेंगे, गारंटी है your brain will search you what is not great happening in your life. So we are really building this muscles.
So now for today's chapter, what we all need to practice is आप सब लोगों को एक मिस्टेक्स देखनी है कि क्या की है, एंड आई रियली इनवाइट यू, एक से ज्यादा भी होती है, आप बिल्कुल उससे ज्यादा देखिए, नहीं देख सकते हैं, ओके। देन सेकेंड इज कि 10 क्या ब्लेसिंग्स हैं व्हाट यू आर रियली ग्रेटफुल, जैसे अभी जगजीत ने शेयर किया, राइट, आपने जब देखा कि उसने उसको जो दिक्कत तकलीफ हुई, शी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने देखा कि उसमें क्या क्या चीजें, किन चीजों के लिए वो ग्रेटफुल हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं जब भी आपने वो गलती लिखी जो आपको लगता है कि मेरे से गलती हुई, कि आपने उससे क्या सीखा और वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सर मेरे लिए कोई मिस्टेक कंप्लेंट भी हो सकता है ना, कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, आई कंसीडर दैट एज अ मिस्टेक। यस, सपोज यदि यदि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपने लाइफ से बताता हूँ कि जैसे अभी क्रिस्टी को तैयार होकर स्कूल जाना है, ओके, आज उसका एग्जाम 7:30 की बस आई, नाउ वो उठी नहीं, वो लेट हुई और वो तैयार नहीं होती, एंड आई स्टार्ट मेकिंग ए कंप्लेंट, क्या है यार ये बच्ची, कुछ भी नहीं होकर तैयार हो सकती है, और मैं इफ आई स्टार्ट शाउटिंग ऑन and I tell her, I know that I am making a mistake right now. My shouting is not going to change her, right? Okay, if I have shouted on her, but if I see from what I have learned from the mistake, then I can clearly see that my shouting is not going to make any difference मेरी बेटी की life में, right? Then I can learn from that it is my responsibility to provide that kind of environment around her as much as I can do so that she can learn from that. Third, whether I have done certain things at night or not, बट ये कब होगा, जब मैं जिम्मेदारी लूं और जब मैं समझूं कि मेरी शाउटिंग इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो बिल्कुल अंतरा, हमारी शिकायतें जो हमको पता है कि ये हमसे गलती हुई, जब उसको हम देखते हैं वो मुझसे मिस्टेक हो गई, तो उसको हम ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। Okay, great. So if anyone have any questions, we can consider that, and then we're going to complete this amazing session. आप में से किसी का कोई सवाल है? रोचक, वरुण, प्रीति, अंतरा, anyone have any question? कोई सवाल आपका? हाँ, okay, great. But मेरा एक सबसे और इनविटेशन है, मेक श्योर आप इसको रियल और जेन्युइनली प्रैक्टिस करें, एंड इफ यू रियली वांट टू शिफ्ट योर एनर्जी, इफ यू रियली वांट टू बी रियली हैपनिंग इन योर लाइफ, प्लीज मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप इसको शेयर कर रहे हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? एंड आई एम सो ग्लैड आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज इस जर्नी के दौरान में वही लोग रह पाते हैं जो रियल में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई रियली वांट टू एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू, राइट? So thank you so much, Rochak. I really want to acknowledge you being consistent in this journey of learning and growing, and it's so amazing about you, right? Thank you, and it will be great, Rochak, कि आप आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको जरूर दिल खोलकर शेयर करें इस ग्रुप में, you know, that is really make a big difference. तो थैंक यू सो मच प्रीति, मुझे पता है आपसे मुलाकात हुई थी और आप जितनी जबरदस्त तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम श्योर आपकी जिंदगी में फर्क पड़ा होगा, और उसको आप शेयर कीजिए ग्रुप के अंदर, और जो आज आपने चैप्टर से लिया है इसको हिंदी में पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा, यू नो। एंड थैंक यू सो मच अर्चना फॉर रीडिंग इट आउट, एंड आई लुक फॉरवर्ड जिस तरह आप पार्टिसिपेट करते हैं, यू शेयर मोर अबाउट कि आज आपने क्या सीखा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन please ping to Jagjit or you can ping to me, if any way we can assist in that, right? But हम दोनों का यही कमिटमेंट है कि आपका पार्टिसिपेशन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। और थैंक यू सो मच वरुण, आई रियली गो थ्रू ऑल योर मैसेज जो आप ग्रुप में शेयर करते हो, आपकी क्वेस्ट फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग इज रियली अमेजिंग, सो थैंक यू एंड कीप पार्टिसिपेटिंग फुल्ली। और ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, यू नो, can we really give a big round of applause to our amazing, charming Jagjit, you know, for her stand for you guys, you know. very proud is, of her.
She's such a brave woman. I am her fan. Absolutely. You know, I am also Ah, like guys ah, only. I Thank you, ma'am. yes, absolutely, Thank you, Jagdeep. thank you. You are really amazing, Jagdeep. मतलब the kind of तेरा जो commitment है ना यार अपने लोगों के लिए, in spite of all this pain and all those things, and you know that is really what everyone is look for कि वो हमारी जिंदगी में हमारे अंदर आए. So thank you, we love you, and you are amazing, Jagdeep. Yeah, I And also ma'am, want to, you will yeah, be fine soon. Don't worry. yeah, I'll be Absolutely. absolutely. I will, in my count of blessings, I will definitely write something for you so that you, Absolutely. Thank Thank you you. so much. that all these wounds heal soon. Thank you so much. I just want to say thank you to Pooran because मुझे जब भी कोई चैलेंज आ जाता है ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी. मैंने कल रात को इसको मैसेज किया कि ऐसे हो गया तो कैन यू लीड ग्रुप एंड उसने आज शायद हल्द्वानी नहीं जाना था सुबह so he's delayed his departure so that he can support me and lead this session. So deeply grateful to you, Pooran, for being Thank there you, for dear. me always. Yeah. Thank you. And it has really make a big difference in my life to coming here and sharing with you all and participating this test. So let's make this day happening, guys. थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा धमाल करते हैं, ग्रुप में थोड़ा शेयर करते हैं, है ना? And I really look forward. मेरी जर्नी बहुत लंबी है, आज 300-350 किलोमीटर ड्राइव करना होगा. मैं आऊंगा, आई एम श्योर. मुझको इतना कुछ चैप्टर दे रहे हैं ना भाई साहब, जा रहे हो तो स्पीड नहीं कर, ऑटोमेटिकली यू नो दैट इज द पावर ऑफ व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ सेशन, यू नो. Yeah. आप unconsciously, you know, your brain start catching the right things. That's the power of association. So I really want to thanks to you, Jagjit, and thanks to each one of you guys. Okay, so let's rock and let's start sharing. Apan share karte hain, and before that we have a ritual. I'm sure Jagdish is going to create that. We're going to pray, right, and want to give our thanks and gratitude to whomever we want to give it, right? Yeah. Just hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. ओके, हमारे अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, so keep practicing ताकि आपको जो वैल्यू लेने आए वो वैल्यू मिलती रहे. एंड कल का चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज का चैप्टर तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर हम ये सीख जाए कि अपनी गलतियों से कैसे सीख लेके आगे बढ़ना है तो जिंदगी वैसे ही बहुत बेहतर हो जाती है. एंड कल का चैप्टर जो है विच इज बिल्ट ऑन दिस, इस वाले चैप्टर के बाद ही वो चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो हमें अपने बारे में एहसास होता है तभी हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, which is about falling in love with yourself. Yeah, sorry guys, I'm not able to speak. So I will see you tomorrow. Have a good day. Bye guys. See you. Thank you so much, Jagdeep.